And Joel. Okay. So in SPSS, for now the data set is in Excel. This is our data set. So with this data set, just give me 1 second. Yes. So with this data set, when you are fetching it into SPSS, the first thing is select the entire data. So once the data is selected, Control C, come to SPSS, right click, paste with variable names. Now all entire data is pasted along with their names. So we'll see the questionnaire. So this is the question for the previous year. The first question is, do the sample profiling of the data using charts or graphs and descriptive statistics for questions 1 to 7. Sample profiling for each variable as well as this descriptive statistics. This data set is all these questions. This question is about age, gender, marital status, education, occupation, average monthly income, and the size of your family home. So you have to do descriptive statistics for all this data from 1 to 7. You can do one-way table for each individual question number, and you can also do two-way tables like you can put rows as age and columns as gender. Again, rows as age and columns as marital status, rows as age and columns as education, rows as age and columns as occupation. Like that, you can 1, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. Like that, you can proceed and do the descriptive statistics. I'll just do it for age and I'll just show you in PHstat. So go to analyze, descriptive statistics, frequencies. Here I'm giving the say gender and then go to statistics, select quartiles, percentiles, whatever data you want, mean, median, mode, sum, and standard deviation, variance, range, minimum, maximum, and all of them. So this should come. Continue should be activated. Second. Raghu, percentile Yeah, is missing. so the percentile is taken off. So standard deviation, variance, range, and minimum and maximum. So with that, we just give the continue. And here you see the charts. Go to charts. For this, I'm doing the pie chart. Then give the values as percentage. So you'll see the percentage, then continue. Format, nothing to change here. Style, nothing to do. Just go to OK. So this is your descriptive statistics for gender. Your interpretation, your interpretation should be, what is this? Why this came as blue color? This shouldn't come in blue. Something was wrong. Okay. PHstat is still better. So can we do some question in PHstat and some? Yeah, you can do in PHstat and that also, but basically this is how you should do. This output is not correct. As you can see, it should only have male and female, but that is the way you do it. It may be some error in data, that's why it is not coming. So the other part being indirectly, if you go to descriptive statistics, you can just put some, this is all numerical data, that's why it has come here. This numerical data say, suppose convenience and put it over here in the options. It will give all the numerical, like descriptive statistics of this particular numerical variable, say range, variance and all, and just click continue and click OK. For convenience, it is giving you descriptive statistics. So this is basically how you do descriptive statistics in SPSS. We'll just move on to the next part. In this questionnaire, second question is not in syllabus because it is forecasting, it is not there. A third part, comment on the satisfaction of the customers from online grocery purchase using demographics. This is also descriptive, the first part, but see the second part. Test the hypothesis that the customers using online grocery purchases are generally satisfied. We have to test it with based on gender and based on marital status. The question is, the suppose in male and female, they are satisfied with online purchase. So where is the satisfied data? When you come to the data set, this satisfaction is our satisfaction data, and we have to test it with both gender and the second one being marital status.
So this is independent t-test. We have to do independent t-test with numerical data on satisfaction, categorical data on gender and marital status. Go to analyze, compare means. Here you can see all the things are, maximum things are here itself. One sample is also here, independent samples is also here, paid sample is also here, one-way ANOVA is also here. Here we are going to independent sample test. The test variable is always numerical variable. So the numerical variable here is convenience. Upon not convenience, it is satisfaction. So upon satisfaction, just select it, click this arrow, it will come here, test variable. Grouping variable, this is categorical data. Here the categorical data is gender. So come to gender, select this arrow. You see the question marks, 2 question marks. Since this is categories, you have to define those categories. For that, go to define groups. So group 1 is what? In gender, how many groups are there? 2 groups are there. One group is male and female. So just put it. Male, then female. Now click continue. Then you go to options. You can see the confidence interval is 95. Alpha level of significance is 5%. So confidence interval is 95. So this is okay. Before this, you have to write your hypothesis. So let me write the hypothesis also. H naught for this and H1. So what is the question? Question is, test the hypothesis that customers using online grocery purchase are generally satisfied with respect to gender. So that whatever you are testing, that will be your H1. Opposite of it will be in H0. So within genders, customers using online purchase are satisfied. This is your hypothesis for H1. What will be for H0? It will be the same, then with genders, customers using online purchase are not satisfied. This is your H0 hypothesis. So once you form the hypothesis, come back to data. We have given the test variable, we have given the grouping variable. Just click on OK. So you can see the significance value. This is the p-value. The first equal variance assume significance two-tailed. This is your p-value. P-value is 0.26, 0.626. Come here. P-value is 0.626. What is alpha? Alpha is level of significance, which if not given is 0.05. If it is given, we have to check it on that. Now p-value is greater than alpha. So do not reject. P-value greater than alpha means do not reject H0. Right? If p-value is less than alpha, then reject H0. Since our condition is this thing, do not reject. Do not reject means what? Within genders, what is your interpretation finally? This is your interpretation. Within genders, customers using online purchase are not satisfied. Right? So this part is understood. The second part, they are asking us to test it with marital status. It is also categorical data. So what is your hypothesis? The same statement. Within marital status, customers using online purchase are not satisfied. Again, here within marital status, customers using online purchase are satisfied. Whatever you are testing, it should be in H1. Whatever you are not testing, the opposite of it is in H0. So now we'll also do the same test. We come back to data set, analyze, compare means, independent sample t-test. We are not doing one sample. Why? Suppose if you are checking for one sample, go to compare means and click one sample. Here you can only enter one variable, and that is also numerical. You cannot group it with marital status. So for not to group it with marital status, we are going compare means independent sample t-test.
When we'll do paired sample t-test, paired we'll do when the two columns are somehow related. If there is no relation, we'll not do. If there is a relation, we'll do paired. Name itself says no paired, means they are related in some way. Independent, they are not related directly. So go to independent. We are testing the satisfaction. It is all there. Grouping variable. We are not testing with gender. No. So send it back. We are testing it with marital status. Put it here. Same, you have to define the groups again. In defining groups, what is the first group? In marital status, married and single are the groups. So MARRI, married. And the second one is single. So check the spellings. If they are wrong, it will not detect. So this is continued. Okay. Then in options, you should be 95 unless given it is 95. This is confidence interval. Level of significance is 5%. Confidence interval is 95%. Confidence interval plus level of significance is totally 100%. Just remember that one. Now we just click OK. Now once we have done the Raghu, yeah, can I ask you a question? yeah, sure. Yeah. So, I mean, is there a possibility that the categories are more than two? And if that is, then how do we define it? Like, because there are only For that two. we have to use the ANOVA. Okay, so then we'll not use the No, t because test, right? here Then we'll- that is a good question. Because within this we can only define two groups. Here only we can define two groups. That's why we Yes. will not use this test. We will use ANOVA for it. That also I will just show you one example. Here you can only define two groups. When you are having that, so that is one way to detect where you can use ANOVA. If you are having more than two groups, you should apply ANOVA over there. That is one way to identify that it is an ANOVA case. Hope that Raghunath, answers. I also had a question. Yes. Why do we take that the satisfaction was like the customers was not satisfied in H naught? Yeah. So what is your question? Test the hypothesis that customers using online purchase are generally satisfied. You are Okay. testing that they are satisfied. Your test value is H1. Whatever you are testing, that is in H1. Within genders, customers using online purchase are satisfied. You have to test that one, right? Okay, so H naught directly becomes not H0 is satisfied. its opposite. Okay, thank you. Yes. Okay. So yeah. So this is the thing, and we have tested it for marital status. जो ये अल्फा तुमने लिया है 0.05 वाला, ये क्वेश्चन में केवल है कि तो रिज्यूम करना है क्या ये 0.05 वाला? Alpha, if it is given, then you should change alpha unless and until when alpha is 0.05 confirm. ये level of significance है. Confidence interval जो होगा, confidence interval is 95%. Confidence interval plus level of significance makes 100%. मतलब जो तू टेस्ट कर रहा है वो the test result is true for 95% of the cases and there might be error for 5%. That significance वो है, इसका meaning वो है. Confidence interval मतलब you are 95% confident that your result is correct. 95% confident मतलब क्या है? 5% error हो सकता है ना, वो alpha है. Unless otherwise given, these are the fixed values for the test we have to take. Hope that answered. Yeah, okay. Okay, Raghu, right. what is the difference between the third question and the fifth question? Let us finish third question first. No. So, okay, everyone fine until now, no? So this we have tested for marital status, independent sample t-test, the significance value is, p-value is, the first value, 0.683. I hope my cursor, my mouse is showing it correctly, 0.683. So now come back here, you should write p-value. P-value is 0.683. Again, alpha is 0.05. Since p-value is greater than alpha, what we should do? Do not reject H0, which means what?
Your interpretation is do not reject means what? H not is it is fine. So within marital status, customers using online purchase are not satisfied. That is your interpretation. Hope I am clear with this. हेलो। तो एक बात हाँ बता हाँ दो, ये जो हाइपोथेसिस लिखना बस इतना ही लिखना है हमें हाइपोथेसिस। हाँ, जस्ट वन लाइन लिखना है और कुछ नहीं, यही है हाँ तो आंसर। हमें बस मतलब शीट में बस इतना ही लिख के आना ना आपने। इतना ही लिखना है बस, इतना ही लिखना है ठीक है। पेपर पे। H नॉट लिखना है, H1 लिखना है, P तुझे जितना आया, अल्फा तूने कितना, बस ये सब कुछ लिखना है तुझे। ठीक है। P तुझे कितना यार आया, अल्फा तूने कितना लिया, P का अल्फा कैसा हुआ, रघु, इसका होने से तू क्या इंटरप्रिटेशन लेकर आएगा। ये मेरा क्वेश्चन था, ये टू टेल में अल्फा 0.05 है, तो वन टेल के हिसाब से डिवाइड करेंगे टू से, या फिर ये लिख के भेजेंगे, मतलब अरे कि एसपीएसएस में चेक तूने का वन टेल टू टेल कहा देखा। अभी क्यों नहीं देगा? टू टेल ही तो करा हमने। ये पूरा टू टेल करेगा तो वन टेल कहाँ कर रहा है वो। अरे नहीं नहीं, ये टू टेल तो करा। मैं पूछ रहा हूँ, जो चेक कर रहे हैं कि सिग्निफिकेंस से ऊपर है नीचे है पी वैल्यू, तो तूने हम्म अल्फा 0.05 लिखा है, ठीक है। हम्म तो जब तू टू टेल कर रहा है तो डिवाइड नहीं करेगा टू से, मतलब मैं पूछ रहा हूँ लिखने के लिए वहां पे लिखना है डिवाइड बाय टू करके, फिर चेक ही करना है डिवाइड बाय टू करके। रुको। मैं उधर तेरे रूम पे आके मारूंगा साले तेरे को। क्षितिज क्या कर रहा है? हाँ, तू क्या बोल रहा है, तो ये वन टे टू टेल का हाँ ये तो पहला केटी जो नहीं सुन रहा वन है, ये 95% कॉन्फिडेंस है ये एरिया। ठीक है। तो हाँ इसको और इसको मिलाते हुए 5% ठीक है। आएगा, उसी को ही हम 0.05 लिखते हैं। नहीं वो तो हो गया जीरो पॉइंट जीरो हाँ, फाइव बट वो दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। इक्वली जीरो स्प्लिट होता है पॉइंट हाँ। जीरो हाँ, तो मैं वो बोल रहा हूँ, अगर जब टू टेल टेस्ट कर रहा है तो पी वैल्यू 0.025 से देखेंगे ना, चेक करेंगे, आके 0.05 से। नहीं 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 नहीं, तो तू क्रिटिकल वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है। ऐसा क्या? तू इसके बारे में बात कर रहा है, टीसी और टी के बारे में। तो डिफरेंस क्या, मतलब वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। इनके अच्छा हिसाब एक से सेकंड देखना रुको। है तो टू, नहीं नहीं, इसको ठीक है क्यों ठीक है देख ठीक है, रहा है, वन। इसको देखना है हाँ ना, ठीक है टी को देखना है। टी लोअर देख कितना है, -3 -0.3189। टी अपर कितना है, 0.20906। ये है ठीक तेरा है टी ठीक है क्रिटिकल वैल्यूज। तुझे टी ठीक है स्टेटिस्टिक कितना आया, -0.408। ये कहाँ ठीक रहेगा, है। ये लेफ्ट में यहाँ जाएगा। रहेगा ना। हाँ ये माइनस, ये कितना आया, -3 आया ना, माइनस जीरो हाँ पॉइंट थ्री वन एट नाइन -4 ठीक है मतलब ठीक यहाँ है आएगा ना। हाँ मतलब रिजेक्शन है ना, एरिया ऑफ रिजेक्शन में ही तो है। ठीक है ये ठीक है। दोनों एरिया ऑफ रिजेक्शन है ना, यही तो एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस है। तो सिर्फ हमें दिखाने के लिए वो सिग्निफिकेंस चेक करना है ना, मतलब पी इसीलिए वैल्यू के हम साथ। सीधा दो तरीका है, या तो तू पी वैल्यू से जा सकता है, या तो टी क्रिटिकल से जा सकता है। जब टी क्रिटिकल से जा रहा है तो टी वैल्यू तुझे हाँ इतना आया, -0.408। ये लोअर टी वैल्यू ये है, ये अपर टी वैल्यू ये है। इसको एक ग्राफ में, ठीक है ग्राफ ऐसे ग्राफ बनाओ, इधर इधर वैल्यू ठीक है लिखो, जो टी वैल्यू कहाँ आएगा। ये दोनों ठीक है। रिजेक्शन रीजन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। ये रिजेक्शन रीजन में आया हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, यस तो ठीक है उसके हिसाब से करते हैं। इसमें वन टेल ठीक वाला है, पूछ सकते हैं क्या? वन टे वाला पूछ लिया तो पीएच स्टार्ट में कर दो। अच्छा ठीक है। राइट, तो next question, analyze the interdependence between the perceived benefits and convenience from the online grocery purchase. Test or its significance is 5 level. तो हाँ ये देख लो, analyze the interdependence between, interdependence मतलब क्या है, एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है, मतलब ये क्या टेस्ट लगाओगे। परसीव्ड बेनिफिट्स एंड कन्वीनियंस वो दिखाता हूँ, ये देख लो डेटा सेट पे। परसीव्ड बेनिफिट्स, परसीव्ड बेनिफिट्स का ये कॉलम है, दूसरा वाला है कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का ये कॉलम है। तो इन दोनों कॉलम न्यूमेरिकल है, पहली बात। दूसरी बात क्या करने के लिए बोल रहे हैं, सिग्निफिकेंस दे दिया 5%, हमने भी वही एज्यूम कर रहे हैं। एनालाइज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन देम फ्रॉम ऑनलाइन ग्रोथ से, मतलब सेम है। तो आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, तुम्हारे पास चार ऑप्शन है। कंपेयर मीन्स के पास आओ, वन सैंपल नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे पास दो कॉलम्स हैं।
इंडिपेंडेंट सैंपल करना है नहीं करना है वो हम एनालाइज कर रहे हैं। पेड सैंपल करना है नहीं, इन दोनों में से एक कर सकते हो। अनोवा करोगे, अनोवा नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों न्यूमेरिकल है, कुछ भी कैटेगरिकल नहीं है, और पूरा बस दो ही कॉलम है तेरे पास। तो इसमें क्या करोगे, दो ऑप्शन है अभी तेरे पास, इंडिपेंडेंट सैंपल करो या पेड करो। क्वेश्चन एक बार क्या आ रहा क्वेश्चन है, फिर से दिखाइयो। क्वेश्चन आया कि इंटरडिपेंडेंस क्या है। फोर्थ पेड टीडे। क्वेश्चन हो गया बस, Raghu, तो आ जाओ। in the senior sheet, it is written when interdependence comes, we have to do correlation. कोरिलेशन, अरे यार आंसर देखो क्या है, क्या है, जस्ट अ मिनट। Raghunath, he is right. कोरिलेशन करना है, Yeah, चलो तो go for कोरिलेशन। correlation. हाँ तो एनालाइज कोरिलेशन कहाँ है, रिग्रेशन के ऊपर। Correlate. Go below. बाइवेरिएट पार्शियल डिस्टेंसेस, बाइवेरिएट, बिल्कुल तो एक ही है, बेनिफिट्स का करना है और कन्वीनियंस का करना है, कन्वीनियंस या सेटिस्फैक्शन, कन्वीनियंस ऑप्शन, significant correlation. Let's see. Clear mind. So these are the correlation values. You can see the Pearson correlation between benefits and convenience being minus 3.13. You're getting some star. Correlation is significant at the 0.01 level. Two tail मतलब 5% करने के लिए दिया ना, वो तो हम नहीं कर रहे हैं। Just a minute. रघु, पर ये हाँ कोरिलेशन चाई स्क्वायर तो है ही नहीं अपने सिलेबस में ना, तो ये ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वरना पेड़ ही लगाए। हाँ, आई डोंट थिंक कोरिलेशन आएगा, बट जस्ट इन केस टू देख लो कैसे करना है, हाँ जस्ट हाउ एक टू बार, डू हाँ वो कर लो। bivariate, or you have to give numerical data here and select all the features which you have to do and just click OK, you'll get the answer. Sorry guys, this I am not aware with respect to correlate, इसको कैसे इंटरप्रेट करना है। बस इतना लिख दो कि जो वैल्यू बेनिफिट और कन्वीनियंस पे जो वैल्यू आया -0.31 थी वो लिख दो, और यहाँ स्टार दिखा है, स्टार का मीनिंग नीचे उसने दिया है कि कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट दिस लेवल, बस वो लिख दो इंटरप्रिटेशन में, बस उतना लिखना है, इससे ज्यादा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो sorry about that, and if anyone knows, please feel free to take control and say, but I don't think it will be asked in the question, so let's skip it for now. So as a satisfaction of the customers derived from the अगर online grocery कोरिलेशन नहीं purchase, करते, अगर रघु कोरिलेशन नहीं करते तो कैसे आने की कोशिश करता था तू फोर्थ वाले में? I was actually trying to do it as a paid test. So कौन सा paid टेस्ट? samples में, Raghu, check the paid sample test box. कुछ आइडिया पड़ रहा है क्या? कहाँ पे? कोरिलेशन की हाइपोथेसिस वाला जो चीट शीट था ना, उससे उठाया मैंने। अरे वो कोरिलेशन नहीं आएगा, इसीलिए तो, अरे उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ओके। एक बार एनोवा के सब कुछ रिग्रेशन करने के बाद एक बार फिर आते हैं उस पे। तो हाँ, so what was this question? Does the satisfaction of the customers derived from online grocery store purchase differs on the basis of age, education, gender, and marital status? So they are asking satisfaction from online purchase is based upon age, education, gender, and marital status. तो इसको कैसे करोगे? अनोवा। Raghu, what is the difference between third question and fifth question? Isn't it the same? Third question, fifth question, in age, you are having how many No, no. categories? Gender and marital status also they ask. See. Gender and marital status इधर पूछा है, हाँ उसका तो सेम है, उसका तो सेम है, for that it is same, but for age, education, for those two you can see
See the age, how many categories are there? देखो 45 to क्वेश्चन नंबर 59, 5 में 35 to डिपेंडेंसी चेक करनी है ना पर हाँ डिपेंडेंट पे ही चेक करना है, तो कौन सा टेस्ट करोगे वो पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन इज I कि वो think it's डिपेंड करता है ANOVA. या नहीं। रघु, क्वेश्चन दिखाओ। एज वगैरह पे तो अनोवा हाँ लग जाएगा, बाकी जेंडर पे तेरा वो लग जाएगा ये टी क्यों टेस्ट। लगेगा इनोवा, क्यों लगेगा इनोवा, क्यों मतलब लगेगा ज्यादा कैटेगरीज है वो ना, दो से बताओ। ज्यादा, दो से ज्यादा वो कैटेगरीज। बताओ, जब ज्यादा कैटेगरीज होंगे एक ही कॉलम का डिपेंडेंट पे जब कर रहे हो। अरे यार देख लो, हमने तीसरा क्वेश्चन पे क्या किए, जस्ट सी द थर्ड क्वेश्चन, टेस्ट द हाइपोथेसिस कस्टमर्स यूजिंग ऑनलाइन ग्रोसरी आर सेटिस्फाइड। सेटिस्फैक्शन को जेंडर पे कैसे किए हमने, एनालाइज पे गए, कंपेयर मीन्स पे गए, इंडिपेंडेंट सैंपल्स पे गए। इधर हमने मैरिटल का कितना ग्रुप डिफाइन किए, दो डिफाइन किए। अब एज पे आओ, एज पे कितना ग्रुप्स है, 1 2 3, 3 है ना, तीसरा को इधर डिफाइन नहीं कर पाओगे, 4 भी है तो इधर नहीं कर पाओगे, तो कैसे करोगे। कंपेयर मीन्स पे आओ, वन वे अनोवा पे जाओ। तो एनोवा में हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो डिपेंडेंट लिस्ट पे चला जाएगा। और हमें फैक्टर्स के लिए इधर इसको लेकर आना है, लेकिन इसको ग्रुप करना है, मतलब इसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 2 3 में कन्वर्ट करना है ना। तो वेरिएबल व्यू में जाओ, और हमारा एज जो है इसका वैल्यूज, यहाँ हमें लेबल देना है। वैल्यू क्या क्या वैल्यूज है देख लो एक बार, 45 to 59 है, 35 टू लिख लेते हैं। एज का 45 to 59 को 1 मान लो, 35 to 44 को 2 मान लो, 20 to 34 को 3 मान लो, और कितना है 60 एंड अबो है। हाँ, तो 60 ईयर्स एंड दिया, तो इसको 4 ऐसे कोड करना है हमें। कोड कहाँ करना है, वेरिएबल व्यू में जाओ, एज के पास जाओ, वैल्यूज के पास जाओ, नन पे पास क्लिक करो, तो ऐसा आ गया वैल्यू। वैल्यू मतलब जो है उधर है, जो वैल्यू है ऑलरेडी, कितना है 45 to 59, तो 45 to 59 इसका लेबल हमें क्या 1 डालना पड़े, इसको ऐड करो, ऐसे ही बाकी सबका भी ऐड करो। 35 to 44 एस 2, मतलब ऐसे मत ऐड कर लेना, क्योंकि समझने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे ऐड करोगे कि असेंडिंग ऑर्डर पे ऐड करो, मतलब 20 to 34 को 1 दे दो, 35 इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, और उसको 4 दे दो। एज असेंडिंग ऑर्डर में समझने के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए आसान होगा। तो 20 to 34 को 1, 35 to 44 इज 2, Raghu, put years also. ईयर्स भी है, अच्छा डाल देता हूँ, 45 to 54 ईयर्स एस 3, एंड 60 ईयर्स एंड, इसको 4 डाल दो, और जो गलत आया है उसको रिमूव कर दो, वापस डाल सकते हो, ऐसे रिमूव कर सकते हो। 20 to 34 ईयर्स, इसको 1 दे दो, और 35 to 44 ईयर्स को 2 दे दो। वाई आर वी डूइंग दिस कोडिंग, सो दैट इसको एक ये 1 2 3 वैल्यूज नहीं है, ये भी कैटेगरीज है। एसपीएसएस को ऐसे कैटेगरी समझ में आएंगे, इसीलिए हम ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमने मतलब वैल्यूज हमारा दे भी दी। ऑनलाइन टेस्ट है भाई, एग्जाम के पहले ही 15 मिनट, पता नहीं। रघु, हाँ जैसे वो जेंडर में मतलब मेल फीमेल या फिर मतलब वो मैरिटल स्टेटस वहाँ में वो दो ही है मैरिड, ना, वहाँ तो दो ही वहाँ है नहीं ना। रखा कि अपन ने ये सिर्फ एज में ज्यादा इसीलिए मतलब। वहाँ भी हमने किया है, कैसे किए हैं, कंपेयर मीन्स पे जाओ, वन इंडिपेंडेंट सैंपल्स में जाओ, यहाँ पे हमने कैसे किए, तो वहाँ जेंडर पे को ऐसे कैटेगराइज देख वन लो, टू नहीं क्या ना ऐसा डिफाइन कुछ। ग्रुप्स में कर दिए ना, इधर कर लिए। अच्छा, ओके ग्रुप ओके। 1 इसको मैरिड पे 1 ले रहा है, 2 को लेजर दे रहा है, इधर भी अच्छा किया है समझ हमने। गया। चलो, नाउ एज यहाँ आ जाओ, और ये एनकोड डी कोड का बटन है, इसको क्लिक करो। मतलब 59 के पास हमने थोड़ा गड़बड़ डाल दी, ईयर्स लिखना पड़ेगा। चलो, तो इधर आओ,
59 नहीं, कैटेगरी कोई ऐड नहीं किया हम। क्या है कैटेगरी? 45 to 59। इट्स 45 to 59, 59 54 किया है। 59 को ऐड कर लिया। 60 years एंड इसको 4 कर लिया। ये इसको रिमूव कर लिया, ये आ गए। ओके, डेटा व्यू में जाओ, ये सब अपने आप अब नंबर्स में आ गए। अब एनालाइज जाओ, कंपेयर मींस, वन वे अनोवा। रघु, ये एज को कोडिंग में मतलब डेटा व्यू में कैसे चेंज किया था? 0123। वेरिएबल व्यू में जाओ, एज के कॉलम, एज के रो के पास आओ, वैल्यूज इधर क्लिक करो। हाँ, वो कोडिंग से मैं समझ गया, फिर वापस डेटा हाँ, व्यू में जाके चेंज कैसे किया था? उसको सेलेक्ट कर, ये एनकोड डिकोड का बटन है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब जब इस डेटा ऐसा है, इसको हम यहाँ नॉमिनल है ना, इसको भी स्केल में आना पड़ेगा, मतलब इसको स्केल जैसे करना पड़ेगा, वो नहीं आ रहा है। जब वो ऐसा आएगा तभी हम कर पाएंगे। एनालाइज कंपेयर मींस, वन वे अनोवा। Raghunath, can we change the existing column age, or we have to add a new column for this यू coding? कैन डू इट एनीवे। अब इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट नहीं आ रहा है। Because this is the given data, right? So can we modify the given data or not? Right. यस यस, मॉडिफाई कर सकते हो उसका कुछ Okay. कुछ बदल रहा है, स्केल को बदलना पड़ेगा। टाइप, अच्छा टाइप, टाइप टाइप को, अच्छा देख लो एक बार आप लोग सब। आई हैव जस्ट टेकन द रघु मेक इट नॉमिनल, एज फिर एंड हो जाएगा। कॉपीड इट। हाँ हाँ हाँ, इधर आ रहा हूँ। इधर जब ये टाइप है ना, टाइप में स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करो। नंबर में जब कन्वर्ट करोगे तब तुम्हारे पास ये स्केल आ गया। ठीक है, ये नंबर पे जब कन्वर्ट, न्यूमरिक में जब कन्वर्ट करोगे तो तब यू कैन कन्वर्ट इट इनटू स्केल। हियर आल्सो यू कैन डू इट। सी द मैरिटल स्टेटस, हमने एज पे किया ना, सॉरी, एज के पास जाओ और इसको भी न्यूमरिक कन्वर्ट करो और ओके। लेकिन जब उसको डिकोड करोगे तब मुश्किल हो जाएगा। कि फॉर नाउ जस्ट लीव इट, वी हैव द डेटा। एज में, अरे यार एज चला गया, डेटा ही करप्ट हो गया। न्यूमरिक पे नहीं आ रहा है। Is it being recorded or recording is over? Are you able to see this thing? रघु, 3 मिनट में But you मीटिंग have to बंद हो जाएगा, convert it into रिकॉर्डिंग चल रहा scale है। only, then we'll be able to do it. चल रहा है, अच्छा हाँ ठीक है। चला गया ना वैल्यूज, वही तो बोल रहा हूँ। Compare means रघु and let one me way let ANOVA. me share my screen. I will carry on. Okay, yeah, go ahead. Should I make you host? No, doesn't matter. Okay. Just stop sharing so I can share my screen. Share. रघु लिसन, नया बना रहे हो ना मीटिंग अभी? क्या? नया बना रहे हो ना, क्योंकि ये टाइम तो हो गया इसका। हाँ हाँ, 2 मिनट ही बचे हैं, ठीक है, ठीक बनाते है, हैं। ये लीव कर देते हैं, फिर नया बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट देख लो, शेयर कर रहा है आशीष। Guys, are you able to see my screen? यस यस। यस। So यहाँ पे जो हम कर रहे थे लास्ट वाले में,
तो अपना इसमें क्या है, जैसे न्यूमेरिक डेटा है, राइट, और ये नॉमिनल है। अभी डेटा व्यू में गए, हमें एनालाइज करना है, अनोवा लगाना है एज के लिए। अभी जो रघुनाथ बता रहा था, जैसे ये चेक करेंगे हम तो ये दिखता है, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये कैटेगरी ऑलरेडी डिवाइडेड है, इसको हम एनालाइज करेंगे। कंपेयर मीन्स वन वे अनोवा। Raghunath, what was the question? Can you repeat the question? satisfaction and age. Satisfaction based on age, right? हाँ एनोवा पे कर रहे हैं। अब वो जाओ कॉन्ट्रैक्ट्स और वो सब कुछ में जाओ। Contracts में कुछ चेंज नहीं करना होता है। कुछ नहीं Post करना hoc में you just have to check the Tucky test. अरे ये नहीं आ रहा Significance is आ जाएगा 0.05. देखना है। That इसने is कैसे right. इसने वो कन्वर्ट किया है, इस पे कन्वर्ट किया है। Options में you have to check homogeneity. Continue. Okay. तो टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऐसे आ जाएगा अपना। तो यू कैन सी की लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 7.717। दैट मीन्स ये अल्फा से कम नहीं है, तो अपना नहीं मॉडल दिख रहा उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तूने। अरे भाई कुछ नहीं भी दिख नहीं रहा आया। तूने दिख नहीं रहा। भाई पर्टिकुलर तेरा स्क्रीन स्क्रीन पर स्टक हो गया। चलो मिनट खत्म हो गया ना, दूसरा लिंक शेयर करते हैं, इसको रहने दे अभी, ठीक है दूसरा लिंक शेयर करते हैं। लीव छोड़ दे कर दो भाई, सब। दूसरा लिंक। हाँ हाँ दूसरा लिंक शेयर करते हैं, इसे अपने आप खत्म होने दो। एक बार जब आंसर सबमिट करेंगे हमारे